विदेश माटी घरर गुमर खोली विवाद रे कांग्रेस नेता राहुल गांधी भारत गणतंत्र विपदरे कहीं अमेरिका एवं यूरोपीय देश चुप बोली ब्रिटेन ने कहिसेंती राहुल जहाकु नहीं देश विदेश रे वर्तमान प्रबल प्रतिक्रिया देखा मिलुछि। बीजेपी राहुल को ऊपर प्रबल वर्षी बेले सीधा मल्लिकार्जुन खड़गे और सोनिया गांधी को करिछि टार्गेट। सबडे विवादीय मंतव्य पई सोशल मीडिया रे भयंकर ट्रोल हेउछंती कांग्रेस नेता राहुल गांधी। If democracy suddenly disappeared in Europe, right? You'd be shocked and you'd be like, oh my God, that's a massive blow to democracy. Well, how would you react if something, a structure 3.5 times Europe suddenly went non-democratic, right? That's happened already. That's not something that is going to happen in the future. That's already happened. So the surprising thing is that the so-called defenders of democracy, which are the United States, European countries, seem to just be oblivious that a huge chunk of the democratic model has come undone. कौन कहले मो राहुल गांधी सतरे कौन भारत रे गणतंत्र उपरे हेउछि आक्रमण काहेकि विदेश माटी रे घर गुमर खोलिले राहुल गांधी भारत आभ्यंतरीण प्रसंग में अमेरिका और यूरोपीय देश हस्तक्षेप कहीं लोड़िले राहुल गांधी राहुल ठीक करछंती ना भूल ठीक किंबा भूल आमे कहिबा ठीक होई न पारे सत किंतु एभली विवादीय मंतव्य पई प्रबल ट्रोल हेलेनी कांग्रेस नेता आ ट्रोल हेबा परे बयान किछिडा बदलाइछंती समस्या हमर बोली कहिछंती आमे ही समाधान करिउ बोली कहिछंती। It's our problem, right? It's an internal problem. It's an Indian problem, and the solution is going to come from inside. It's not going to come from outside. It's important for you too. It's not just important for us. We'll deal with our problem. But you must be aware that this problem is going to play out at a global scale. It's not just going to play out in India, right? And what you do about it is of course up to you. But you must be aware that in what is happening in India, the idea of a democratic model is being attacked and threatened. राहुल को एभली मंतव्य रे बीजेपी खपा विदेश माटी रे राहुल भारतर सम्मानहानि करिसंती भारत तार आभ्यंतरीण मामला रे केबे भी कहार हस्तक्षेप को बर्दाश्त करिवो नाही बोली सफा सफा शुणे रहिसंती बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद। राहुल गांधी जी विदेश जाते ही आपको हो क्या जाता है? सारी मर्यादा, सारी शालीनता, सारी परंपरा, सारी लोकतांत्रिक शर्म सब भूल जाते हैं। आज राहुल गांधी ने भारत का जो एक कंसेंसस रहा है कि नो फॉरेन कंट्री मस्ट इंटरवीन इन इंडियाज इंटरनल अफेयर्स, उसको विदेश की धरती से शर्मसार करने की कोशिश की है। राहुल को एभली विवादीय मंतव्य उपरे सीधा कांग्रेस नेतृत्व को टार्गेट करछंती रविशंकर प्रसाद। कांग्रेस सभापति मल्लिकार्जुन खड़गे एवं सोनिया गांधी स्पष्टीकरण रखिबाकू दाबी करिछि बीजेपी। लेकिन एक बड़ा सवाल आज हमें कांग्रेस पार्टी से पूछना है, उनके अध्यक्ष खड़गे साहब से पूछना है और राहुल गांधी की माताजी सोनिया गांधी जी से पूछना है। क्या कहा राहुल गांधी जी ने कि यूरोप और अमेरिका को भारत में लोकतंत्र को बचाने के लिए इंटरफेयर करना चाहिए। ये उनके शब्द है ना? क्या मतलब है इसका? सरकार किसी की भी हो, हम कभी किसी विदेशी ताकत का भारत में आंतरिक हस्तक्षेप को लेकर मुखर विरोधी रहे। राहुल को कहवा कथा केवल भारतर गणतंत्र विपदरे नहीं, यार प्रतिटी अनुष्ठान विपदरे और चापरे। बीजेपी क्षमतार अच्छी सत किंतु आरएसएस ही तार गोटे पर गोटे एजेंडा हासिल करथुवा कहिसंती राहुल गांधी। One organization called the RSS, fundamentalist fascist organization, has basically captured
pretty much all of India's institutions. RSS is you can call it a secret society. It's built along the lines of the Muslim Brotherhood, and the idea is to use the democratic contest to come to power and then subvert the democratic contest afterwards. And it shocked me at how successful they've been at capturing the different institutions of our country. The press, the judiciary, parliament, election commission, all the institutions are under pressure, under threat, and controlled in one way or the other. विमुद्रीकरण एवं भारत चीन सीमा विवाद नहीं मध्य नरेंद्र मोदी सरकार को विदेश माटी टार्गेट करने को भूली नाहंती राहुल गांधी. Demonetization of the Indian currency. We were not allowed to debate in parliament. Right? The farmers' bills, where large numbers of farmers were out in the street, we were not allowed a conversation in parliament. The GST, we were not allowed. When Chinese troops entered our territory, we were not allowed to have a conversation in parliament. The interesting thing is that when they did it, our Prime Minister said, in a meeting with the opposition where I was there, that not a single inch of Indian territory has been taken. Right? Now, what message does that send to the Chinese? Right? The Chinese know they're sitting on 2,000 square kilometers of our territory. Our military knows it. And our Prime Minister says, well, they're not there. विदेश माटी रे देशर आभ्यंतरीण प्रसंग खुलासा करवा एवं से सबुर समाधान पई विदेशी हस्तक्षेप लोड़िबा राहुल को पई महंगा साब्यस्त होइछि. बीजेपी सरकार रो नेता और मंत्री राहुल को एभली मंतव्य उपरे तीव्र प्रतिक्रिया प्रकाश करथिबा बेले साधारण लोके भी किछि कम ट्रोल करि नाहंती. ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज 18 ओडिया.